हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, आज हम सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What is the necessity of learning another sensitive term, dispersion, after the measure of central tendency? Many times it happens that only with the help of knowledge of average we want to draw the any conclusion, or the conclusion may not give proper satisfaction. So let's see one example. So for example, there are two students, student A and student B. We ask about the marks, that is average marks scored in exam, and both of them have scored average 50. Now from average study, our conclusion on performance is same. But if I study individual marks of a student, then student A marks of 5 subjects are 30, 40, 50, 60, 70. If we had this total and then divide by 5, we get, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70. 250 divided by 5. So average comes to 50. If we had the marks of student B, then the marks of 5 subjects are 46, 48, 50, 52, 54. This also we add and get the total and divide. So we make the total of 46 plus 48 plus 50 plus 52 plus 54. Total is 250 divided by 5. So average of marks comes to 50. दोनों का एवरेज सेम है, बट डिफरेंस क्या है अब इन दोनों के बीच में? क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि परफॉर्मेंस ऑफ विच स्टूडेंट इज बेटर। यस, तो क्या करेंगे? सो व्हाट वी ऑब्जर्व, द परफॉर्मेंस ऑफ बी इज वेरी क्लोज. मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इज नियर अबाउट 50. उसके मार्क्स का जो रेंज है वो 46 से 54 के बीच में आता है, बट स्टूडेंट ए के मार्क्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 30 to 70. So in student A, spread scatterness is more. तो जो नंबर करीब नियर है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसे कि स्टूडेंट बी का है. दिस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड वेरिएशन परफॉर्मेंस. If student B appears in next exam, we can expect that he should score more marks, between 46 to 54 के बीच में तो लाएगा ही लाएगा. But this is our expectation from previous record. But if first student, that is student A, appear in the exam, he can score excellent or very average. So there is a large variation in his performance. In B is very less variation. So whenever we have to study variation, consistency, uniformity of the distribution, we are required to use dispersion. So dispersion measures spread of scatterness of the data. In B, spread is कम, less. In A, spread is ज़्यादा, that is more. So here dispersion is less and dispersion is more
हमने देखा इन स्टूडेंट ए एंड बी में, राइट. नाउ if we take another student, let's see, give them name C and his marks, उसके एवरेज मार्क्स जो हैं 50 एंड उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो थे ऑफ 5 सब्जेक्ट्स वेर 50, 50, 50, 50, 50. So in this case the dispersion is 0 because there is no variation. So we say in C 0 dispersion, in B less dispersion, in A higher dispersion. So dispersion measures the difference between the number. Average can give the part of the distribution, but it cannot give the complete identity. So part of knowledge from average, but not complete knowledge. So this is the necessity of learning the dispersion. So in short, dispersion is the study of spread or scatterness of the data is called dispersion. Note, so from the above discussion, what we note is large dispersion indicates little uniformity in the item of the distribution. Conversely, a small dispersion indicates high uniformity. Perfect uniformity would mean that every item in the distribution was exactly the same. It may be noted that the measure of dispersion measure only the degree, that is amount of variation, but not the direction of the variation. The measure of dispersion are also called average of second order because this measure gives an average of the difference of various items from an average. Yes, इसे क्यों सेकेंड ऑर्डर बोला? सी फर्स्ट ऑर्डर हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को. तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप सिलेक्ट करो स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? क्या आप कर पाओगे सिलेक्ट? क्योंकि दोनों के एवरेज तो 50 थे. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि मैं किसको सिलेक्ट करूं, कंफ्यूजन हुआ स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी, क्योंकि दोनों के एवरेज 50 थे. तो बट जब मैंने आपको इनके मार्क्स दे दिए, सो जब आपको मार्क्स आए इनके, तो फ्रॉम दैट मार्क्स आपने वेरिएशन देखा एंड फ्रॉम दैट वेरिएशन यू सिलेक्टेड स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, राइट. सो उसी तरीके से तो आपने जो ये वेरिएशंस देखा दैट इज एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और ये एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का. नाउ वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्जन. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्जन आर टू सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. नंबर 1, to determine the reliability of an average. Measuring variability determines the reliability of an average by pointing out to what extent the average is representative of the entire data. Point number 2, to facilitate comparison. Measures of dispersion facilitate comparisons of two or more distributions with regard to their variability. Point number 3, to facilitate control. Measures of dispersion determine करते हैं nature and cause of variation in order to control the variation itself. Point number 4, to facilitate the use of other statistical measures. So measuring variability facilitate the use of other statistical measures like correlation, regression, statistical inference, etc. मतलब हम इन जगहों पे भी इनको डिस्पर्जन को यूज करते हैं. नोट, एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर. डिस्पर्जन मेजर्स एवरेज डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम देयर एवरेज. Now we will be discussing requisites of a good dispersion.
Requisites of a good dispersion. Number 1, it should be simple to understand. Second, it should be easy to compute. Third, it should be based on all the items of the series. Fourth, it should not be unduly affected by extreme items. Extreme items many times are not the true representatives of the data. So, their presence should not affect the calculation to large extent. Point number 5. It should be rigidly defined by mathematical formula so that the answer is derived by different persons who try to compute it. It should not depend on the personal prejudice or bias of a person computing it. Point number 6. It should be capable of further algebraic treatment. That means combined. This means combining groups, calculations of missing values, adjustments for wrong entries, etc. So which are possible without the knowledge of actual values of all items. Such treatment should be possible with a good measure of dispersion also. 7. It should have sampling stability. It means that the average difference between the values obtained from the sample and the corresponding values from the population should be the least. If it is so far a measure of dispersion, it is the best measure माना जाएगा. So that means again a sampling stability. पूरा एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से आपने डिस्पर्जन निकाला और एक होता है कि आपने लिमिटेड लोगों को उसी ग्रुप में से सिलेक्ट किया और उसमें से आपने डिस्पर्जन निकाला तो वो आपस में नियर अबाउट होना चाहिए. So it should have a sampling stability. Now we will be discussing on the types of dispersion. Types of measure of dispersion is divided into two parts. First is absolute measure of dispersion. Second is relative measure of dispersion. Now absolute measure of dispersion तो अगर मैं एक सिंपल से टर्म में बोलूं तो दो टर्म का डिफरेंस. एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीन्स इन सिंपल टर्म्स दो टर्म अगर हैं तो उनको हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं. नाउ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन which is expressed in the same statistical unit. Yes, same statistical unit. मतलब कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो सेम यूनिट होगा वेरिएबल का. अगर आपने डिफरेंस हाइट इन सेंटीमीटर निकाला है देन योर फाइनल आंसर जो भी डिफरेंस आएगा उसके बाद में आप सेंटीमीटर लगा देंगे यूनिट. इफ वेट इन केजी देन केजी, इफ वेजेस इन रुपीस देन रुपीस वुड बी द यूनिट. In relative measure of dispersion, it is a pure number and independent of unit of measurement. That means no unit is required as it is in the ratio form. Absolute measure of dispersion में these measures are not suitable for comparing variability of two or more distributions. क्योंकि as it carries the same unit given in the distribution तो हम comparison नहीं कर सकते. In relative measure of dispersion, it is used to compare and consistency और variability भी हमें पता चलता है. क्योंकि relative dispersions are always suitable to compare the dispersion के लिए हैं between the two distributions which are in the different units. So in relative measure comparison is possible when two units are different. जबकि absolute measure of dispersion में if two units are different you cannot go for the comparison. The amount of variation is designated in these measures. The degree of variation is designated in this measure. Now in relative measure of dispersion में हमने अभी आगे बोला था कि ये रेशियो फॉर्म में होता है. तो रेशियो फॉर्म में एक फॉर्मूला भी है. सो रिलेटिव डिस्पर्जन इक्वल्स टू
absolute dispersion divided by measure of central tendency multiplied by 100. Okay. Now, absolute measure of dispersion is divided into two parts, based on selected items and based on all items. So, based on selected items, or you can say based on selected observations. तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन. Based on all items, that is based on all observations, we find mean deviation and standard deviation. So ये था absolute measure of dispersion. ये आप जब 4 फाइंड करते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर होगा, we have to write unit. Okay, यहाँ पे हमें यूनिट लिखना पड़ेगा पीछे कंपल्सरी, because it is absolute measure of dispersion. Now relative measure of dispersion is divided into two parts. First, based on selected items. Second, based on all items. Now based on selected items or observations, we find coefficient range. हम coefficient of range find करेंगे. Second, coefficient of quartile deviation. So when we find based on all items, we find coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं coefficient of variation. That means कि in statistics, whenever we use coefficient word is used, it is always a unit free होगा. Secondly, relative measure of dispersion का दूसरा नाम है coefficient. So that means if I said coefficient of range, so I can say relative measure of range. Coefficient of quartile deviation, so that means I can say relative measure of quartile deviation. So in question, they can ask you relative measure also, or they can use the word coefficient also. So let us discuss the multiple choice questions जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है. Number 1, average which represents dash amount of dispersion in data is more reliable. Option A more, option B less, option C same या none. So average which represents dash amount of dispersion in data is more reliable. तो क्या आंसर आएगा? Less. So average which represents less amount of dispersion in data is more reliable. Question number 2. Average which represents dash amount of dispersion in data is less reliable. Option A more, option B less, option C same, option D none. So average which represent dash amount of dispersion in data is less reliable. The answer is more. So average which represents more amount of dispersion in data is less reliable होता है. Third, type of measure of dispersion. Option A absolute measure of dispersion. Option B relative measure of dispersion. Option C both A and B. Option D either A or B. So type of measure of dispersion जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गए. So we say that both A and B. Question number 4. Absolute measure of dispersion based on selected items includes range and quartile deviation. Option B mean deviation. Option C standard deviation. Option D none. So we say that range and quartile deviation. Fifth, relative measure of dispersion based on all items includes option A mean deviation and standard deviation. Option B coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation.
Option C, coefficient of range and coefficient of quartile deviation, and option D, none. So relative measure of dispersion is based on all items. ये किसको include करेगा? Yes, option B, coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation. Because हमने बात किस पे करी है? All items पे. Question 6. When it comes to comparing two or more distributions, we consider option A, absolute measure of dispersion, B, relative measure of dispersion, C, both A and B, and D, either A or B. Yes, the answer is relative measure of dispersion. So when it comes to comparing of two or more distribution, तो comparing के लिए relative measure of dispersion आएगा. 7th, which one is difficult to compute? Relative measure of dispersion, absolute measure of dispersion, both A and B या range? Now definitely absolute measure of dispersion तो है, वो difference find करते हैं. Relative measure of dispersion में हमें दो averages को divide करना होगा, तो मतलब उनको हमें अलग से find करना होगा और उसको बाद में ratio में convert करना होगा. So I can say over here is which one is difficult to compute is relative measure of dispersion. So option A. 8. The amount of variation is designated as dash measure of dispersion. The amount of variation is designated as dash measure of dispersion is absolute. 9. The degree of variation is designated as dash measure of dispersion. Relative, absolute, both या none. So the degree of variation के बारे में बात हो रही है, तो we will say it is relative measure of dispersion. 10th, for purposes of comparisons between two or more series with varying size or number of items, varying central values or units of calculations, then only dash measures can be used. Yes, the purpose of comparison word है, तो comparison हम किस में करते हैं? Relative में करते हैं कि absolute में करते हैं? तो आपको यहाँ से ही आपका आंसर मिल जाएगा. So the purpose of comparison, that means answer goes to relative. So option A. 11. Dispersion measures the scatterness of set of observations, the concentration of set of observations, both A and B, या D, neither A and B. So dispersion किसको measure करता है? तो dispersion measure करता है option A, scatterness of set of observations को. Question 12. Measure of dispersions are called average of the order. तो measure of dispersions are called average of the order. कौन सा order बोलते हैं इसको? Second order. So option B is the answer. Now we will be discussing the range. So what is the definition of range? It is defined as difference between highest and lowest observation. That is called range. So जो भी observations दे रखा होगा, आपको उस observation में से highest observation and lowest observation को find करके उनका difference find करना है. और जब आप difference find कर देंगे तो आपको क्या दे देगा? Range. इसके फॉर्मूला क्या है? So range equals to h minus l, or range is equal to xh minus xl, that is highest observation, lowest observation, or range is equal to l minus s, or range is equal to xn minus x0. Now over here h and l means highest and lowest. यहाँ पे मतलब
हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x। lns का मतलब होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, xn एंड x0 का मतलब होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब ये ऐसा मैंने आपको फोर्स क्यों दिया है, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला यूज किए अलग अलग वेरिएबल्स को देके, right? So we have given over here, but what I considered is h minus l is the best over here. Coefficient of range formula is h minus l divided by h plus l into 100. So highest minus lowest divided by highest plus lowest, observations into 100. Range में unit will come, in coefficient of range unit will not come, ये ध्यान रखना। Now note certain points. Number 1, for group data class interval must be exclusive type to find range. So that means कि अगर आपको inclusive दे रखा है तो आपको उसको exclusive में convert करना पड़ेगा, and then you have to find range. Second, in range frequencies are not considered. Yes, frequencies are not considered in calculation of range. अगर इन्होंने आपको frequency भी दे दी है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है ना हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट मींस मुझे x से मतलब है, आई नीड ऑब्जर्वेशंस। थर्ड, always remember unit is mandatory in range. If not given then you can go for none if none is given. अगर मान लो कि सभी के अंदर में यूनिट नहीं दिया हो तो आप लास्ट में उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर मान लो कि ए बी सी में यूनिट नहीं है, आंसर इज सपोज 20 एंड दे हैव नॉट गिवन यूनिट इन जहां पे 20 लिखा है और ऑप्शन डी में नन दे रखा है, देन डेफिनेटली एट दैट टाइम यू विल सिलेक्ट नन। बट अभी ए बी सी डी में 20 30 40 50 ऐसा दे रखा है पर यूनिट रुपीज नहीं दे रखा है, तो उस टाइम पे यू कैन सिलेक्ट 20 एट दैट टाइम बिकॉज नन नहीं दिया हुआ है इसीलिए। ओके, नाउ पर्टिकुलरली मुझे ये बताओ कि रेंज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेंज हमने कहाँ फाइंड किया लाइफ में, इतना मैंने डिस्कस कर लिया अभी आपसे। अब मुझे आप बताओ कि रेंज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं रेंज को। आपने कहीं तो सुना होगा ना रेंज कहाँ पे आता है। अच्छा, एक जन बोल रहा है सर वो टेलीफोन का रेंज जो कोडलेस होता है ना फोन सर, वो एक रेंज है कि वो इतने ही मीटर में बिना उसके रह सकता है। ओके सर, वाईफाई का कनेक्शन, वाईफाई हम लोग जो घर पे यूज करते हैं ऑफिस पे यूज करते हैं उसका भी एक रेंज होता है। ओके सर, हम लोग जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार पूछता है, हमको पूछता है सर के आपकी रेंज क्या है, मतलब आप कितना तक का खरीदना चाहते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये कोई 10,000 से लेके 12,000 तक का मोबाइल दिखा दो सपोज, तो आपने एक रेंज दे दिया ना सर 10 से 12, तो 10 क्या हो गया सर आपका लोएस्ट हो गया और 12 आपका हाईएस्ट हो गया। ओके राइट, तो इन सब जगहों पे हमने वर्ड रेंज सुना है। सो पर्टिकुलरली जो रेंज का इंपॉर्टेंस है, इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक और बोल सकते हो रेंज ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी यूनिट जब प्रोड्यूस होता है तो उसे पूछा जाता है कि आपके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने निकलते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, तो वो बोलेगा भाई आउट ऑफ दिस 1000 टन्स प्रोड्यूस कम से कम मेरा 50-60 डिफेक्टिव आता है यूनिट आइटम्स। तो over here we use the range. Now calculate range and its coefficient for the following. Wages in rupees given है 55, 42, 40, 47, 53, 60. तो सॉल्यूशन में हाईएस्ट इज 60, लोएस्ट इज 40. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। 60 minus 40 equals to 20 rupees. Now coefficient of range. Highest minus lowest, highest plus lowest into 100.
is equal to 60 minus 40 divided by 60 plus 40 into 100 equals to 60 minus 40 is 20 divided by 60 plus 40 100 into 100. 100 cancel, it comes to 20. So we say that our final answer is range is rupees 20 and coefficient of range is equal to 20. Now practically अगर आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो मेन फॉर्मूला है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो दैट इज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल है इनटू 100 तो हमारे ICAI ने किया है, यस उन्होंने किया है ICAI ने, सो दैट टू एनलार्ज द नंबर एंड फैसिलिटेट द कंपैरिजन आपके लिए इजी कर सके। ओके इसीलिए इनटू 100 ICAI ने किया है। कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 2 है। हाइट सेंटीमीटर्स में दे दिया गया है 160, 165, 170, 175, 180, 185 एंड पर्संस इज बीन गिवन। नंबर ऑफ पर्संस है 4, 7, 11, 15, 12, 16। तो सॉल्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसीज आर नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ रेंज। हम फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर नहीं करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ रेंज, दैट मींस नंबर ऑफ पर्संस विल नॉट बी कंसीडर्ड। So my highest will be 185, lowest will be 160. So range is equal to highest minus lowest observation. 185 minus 160 will give me 25 centimeters. Now coefficient of range, highest minus lowest divided by highest plus lowest equals to क्या देगा? So that is 185 minus 160 divided by 185 plus 160 into 100. So 185 minus 160 करेंगे तो it will be 25 divided by 185 plus 160, 345 into 100. अब आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे? 25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 345 और 25 डिवाइडेड बाय 345 into 100. So you will get the answer 7.246. So we say that range is equal to 25 centimeter and coefficient of range is equal to 7.246. Question number 3. Calculate range and its coefficients. So weight given in kg, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59. Students 4, 8, 15, 12. Solution. For analysis of data of class intervals must be of exclusive type होना चाहिए. So over here it has been given inclusive, right? So lowest observation is L is equal to 40 minus 0.5 करना पड़ेगा, so that is 39.5. Highest H equals to 59 plus 0.5 will give me 59.5. So आपको क्या करना है? Inclusive class को exclusive class में convert करना पड़ेगा. So range is equal to highest minus lowest. So 59.5 minus 39.5 equals to 20 kg. Coefficient of range H minus L divided by H plus L into 100 is equal to, now H minus L, 59.5 minus 39.5 divided by 59.5 plus 39.5 into 100 equals to 20 divided by 99 into 100. So coefficient of range is equal to 20.20. Answer is range equals to 20 kg हो गया and coefficient of range is 20.20. Next topic is effect of
shift of origin, origin means plus minus, and change of scale, scale means multiply and divide. So first we will be discussing on effect of shift of origin on range. Example, X observations are 10, 12, 7, 8, 11. Over here, my highest observation is 12 and lowest observation is 7. So range of X is 12 minus 7. So range of X equals to 5. Now Y observation, that is X plus 3. Each value of X is increased by 3. So 10 plus 3, 13. 12 plus 3, 15. 7 plus 3, 10. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. So over here in Y observation, the highest observation is 15 and lowest observation is 10. So range of Y equals to 15 minus 10. तो 15 माइनस 10 का रेंज आपको क्या मिलेगा 5. सो नो चेंज इन वैल्यू ऑफ रेंज. पहले रेंज ऑफ एक्स में आपका कितना था 5 एंड रेंज ऑफ वाई में भी कितना आया 5. इवन ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 3. z is equal to x minus 2. Each value of x is decreased by 2. So 10 minus 2, 8, 12 minus 2, 10, 7 minus 2, 5, 8 minus 2, 6, 11 minus 2, 9. So in Z observation, we observe the highest observation is 10, lowest observation जो है 5 है. So range of Z क्या होगा? Highest minus lowest, 10 minus 5. So range is equal to 5. So range of Z आया 5. Range is not affected. Range of X 5, range of Y 5, range of Z 5. Even हमने उसमें each value of X increase by 3 किया था Y में, Z में each value of X decrease by किया 2 से, तो भी range of X को कोई फर्क नहीं पड़ा. सो रूल बोलता है रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. तो रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके ओरिजिन में कुछ भी करें, चाहे प्लस करो या माइनस करो, माय रेंज वुड रिमेन सेम. सो रूल 1 इज क्लियर. रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. Now, example X observations हैं 10, 12, 7, 8, 11. So range of X क्या आएगा? Highest is 12, lowest is 7. So range of X is equal to 12 minus 7 equals to 5. Now अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? Change of scale डिस्कस कर रहे हैं. That is multiply and division form. So Y is equal to 2X. Each value of X is multiplied by 2. So 10 multiplied by 2, 20. 12 multiplied by 2, 24. 7 multiplied 2, 14. 8 multiplied 2, 16. 11 multiplied 2, 22. So in Y observation, my highest observation is, yes, 24. And lowest observation is 14. So range of Y is equal to 24 minus 14. So range of Y equals to मुझे क्या मिलेगा 10. Range also get multiplied exactly by 2. अगर आप नोट करेंगे तो range of X क्या था 5, range of Y कितना है 10, मतलब 5 से 10 हुआ, मतलब multiply 2 करो range of X में, तो 5 multiply 2 is 10. So that's why I said range also get multiplied exactly by 2. Y is equal to minus 3x. Each value of X is multiplied by minus 3.
So 10 multiply minus 3 minus 30. 12 multiply minus 3 minus 36. 7 multiply minus 3 minus 21. 8 multiply minus 3 minus 24. 11 multiply minus 3 minus 33. अब मुझे रेंज ऑफ y फाइंड करना है यहाँ पे. अभी यहाँ पे रेंज ऑफ y क्या होगा? चलो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा. आई एम वेटिंग. पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है. Yes. So over here the highest is minus 21 and lowest will be minus 36. So range is equal to minus 21 minus minus 36. So is equal to minus 21 plus 36 करेंगे. So you will get 15 and that too plus 15 मिलेगा. So there is no effect of negative sign. बट मैग्नीट्यूड इज अफेक्टेड. मैग्नीट्यूड क्यों इफेक्ट हुआ? पहले था माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, बट आंसर किस में आया? 15 में आया. सो रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रेंज इज अफेक्टेड बाय पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ स्केल. ओके. सो एप्लीकेशन इन एमसीक्यू कैसे होगा इसका? चल कि इफ y इज इक्वल टू ax, a का मतलब है चेंज ऑफ स्केल, plus b, that is shift of origin, then range of y equals to modulus a range of x. yes, modulus a. अब आप देखो आपने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया था? लास्ट स्लाइड में माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर भी मेरा आंसर क्या आया था? प्लस में आया था, राइट? ओवर हियर b is not considered in equation of range because range is not affected by shift of origin. क्योंकि मैं प्लस करूं माइनस करूं उससे रेंज को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम b को लिखेंगे नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि if relation between x and y is given by y equals to minus 2x plus 5 and range of x is 3, find range of y. सॉल्यूशन है गिवन y is equal to minus 2x, that is माइनस क्या है? minus 2 is a constant of change of scale, plus 5 is constant of shift of origin. So relation of range of x and y is range of y equals to modulus a. अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2 into range of x. रेंज ऑफ y इक्वल्स टू, तो -2 जो है दैट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम मॉड्यूलस में क्या है? माइनस का साइन विल बी प्लस हो जाएगा जब उसको ओपन किया. एंड रेंज ऑफ x क्वेश्चन में दिया है 3, सो 2 into 3 is 6. So I say that range of y is 6. Question number 5. If relation between x and y is 4x plus 5y equals to 60 and range of y is 12, then find range of x find करना है. So solution है given 4x plus 5y equals to 60. Now over here मेरे को range of y दे दिया गया है 12 and range of x find करना है. So 4x equals to minus 5y प्लस 60. तो मैं 5y को राइट साइड ले गया. सो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 4y प्लस 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो दैट विल कम टू 15. क्योंकि जो 4 है लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, पर वो डिवाइड दोनों टर्म को होगा. सो रेंज ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस में -5 upon 4 multiply range of y, which is equal to 5 upon 4 multiply range of y 12. So that will give me 15 because 5 into 12 is 60 divided by 4.
So we say that range of x equals to कितना आ गया 15. Now we talk about the properties of range. First, range has no mathematical properties. Okay. In dispersion, only standard deviation has mathematical properties. So that means range, quartile deviation and mean deviation के पास mathematical properties नहीं है. Generally mathematical properties में हम लोग combined use करते हैं. That is combined groups. Okay. So we discuss the important points of range. First point, it is simple to calculate and easy to understand है. It is quickest of all methods. क्योंकि आपको क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है ना. It is not based on all observation. Definitely क्योंकि हम highest observation and lowest observation ही consider कर रहे हैं. It is affected by extreme values. क्योंकि हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, अगर वो ही कुछ ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो मेरा रेंज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. फिफ्थ, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स. सिक्स्थ, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. सेवेंथ, it is affected only by positive magnitude of change of scale. Example, if y is equal to ex plus b, then relation between range of x and y is, so range of y equals to modulus a into range of x. 8. It is used in quality control to find the number of defectives. So I hope the important points of range is clear to you. Thank you friends. So in next lecture we will be discussing on the MCQs of range, right? And then we will discuss about the quartile deviation. If you have any query, then definitely you can reach me on 76008 28696. Thank you and be safe. Take care.